हेलो एवरीवन। अभी जो डिक्टेशन देने वाला हूँ ये पटना हाई कोर्ट के लिए बहुत ही स्पेशल डिक्टेशन होने वाला है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हम लोग ऑलरेडी बैच स्टार्ट कर दिए हैं। अभी आज आप लोग देख पाएंगे कि मेरे पीछे स्क्रीन से आप लोगों को मैं डिक्टेशन देने वाला हूँ। तो लीजिए और उसके बाद मिलते हैं। Neerja Bhanot was born to Harish and Rama Bhanot on 7th September 1963 in Chandigarh. Later the family moved to Mumbai. Neerja was a sensitive and compassionate young woman. Her inner beauty reflected on her serene, beautiful face. Following a conventional arranged marriage in 1985, she joined her husband in the Gulf. Under the strain of dowry pressures, Neerja returned home to her parents in Bombay within 2 months. Neerja was a woman of dignity and strength. She would not relent to pressures of dowry. Her husband set humiliating conditions for her return to him, and Neerja's family did not comply. The marriage had turned sour. Neerja decided to move on in life and she signed a modeling contract. On 5 September 1986, she had returned from a day-long shoot for a modeling assignment. She was the senior flight purser on the flight on which her courage was to be tested, the test that made her so very special to our country, to humanity. At Karachi, the plane was hijacked by 4 heavily armed terrorists. Immediately Neerja rushed towards the cockpit to inform the captain. A terrorist caught her by her ponytail, but she managed to shout the hijack code. Another flight attendant who caught the code conveyed it ahead. What followed was a traumatic experience for all those on board. The 3-member cockpit crew of pilot, co-pilot and the flight engineer exhibited great cowardice. They deserted the plane, and the 360 passengers and a 13-member cabin crew were left in the hands of the heartless terrorists. Neerja was the cabin crew leader. With grit and a deep sense of duty, she took over command. She kept the passengers calm and ensured that they were comforted. She continued to serve and attend to the passengers' needs. She realized that the terrorists would harm the American passengers the most. Hoping to confuse the terrorists about their identity, she discreetly collected all the American passports and hid them. The trauma of the hijack continued for about 17 hours. Since the power had begun to fail, the lights became dim. तो अभी आप लोग लिख लिए हैं ये डिक्टेशन। अभी इस डिक्टेशन को अच्छे से आप लोग एनालिसिस कीजिए। जो जो आप लोगों ने आउटलाइंस लिखे उस आउटलाइन को अच्छे से पहले एक बार रीड आउट कीजिए। उसके बाद आप लोगों को अगर आउटलाइन में भी आप लोग रीड आउट नहीं कर पा रहे ठीक से, तो जो जहाँ जहाँ आप लोग नहीं लिख पा रहे उसको आउटलाइन को मार्क कीजिए
और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन कीजिए। ट्रांसक्रिप्शन अगर आप लोग चाहते हैं कि खुद से करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप लोग हमारे सॉफ्टवेयर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हमारे स्टेनो सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए है, ओनली 99 रुपीज़ में आप लोग फुल एक्सेस मिलेगा आप लोगों को 1 महीने के लिए। और आप लोग ऑल बैचेस आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी डिक्टेशंस आप लोग जितना बार मर्जी लिख सकते हैं। तो आप लोग हमारे सॉफ्टवेयर से जुड़िए। सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फीचर्स हैं नए नए। आप लोग यहाँ पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप लोगों को एनवायरनमेंट मिलेगा। आप लोग यहाँ से और भी बहुत सारे फीचर्स है। आप लोग सॉफ्टवेयर में विजिट कीजिए। सॉफ्टवेयर का डेमो जो वीडियो है वो भी मैंने दे दिया है। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी दिक्कत हो या कुछ भी गाइडेंस के लिए हम लोग ऑल टाइम है। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़िए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी अगर पूछना है तो टेलीग्राम से ज़रूर पूछिए। थैंक यू।